I'm proud. I think it's a very proud moment, for such big brands to come and present themselves in India. Um, I think all we sabhi log hai कि all should come in India, and they all should. But yes, now that we're talking about bikes, I mean, I'm a big fan of bike, by the way. So my college days have only. So I used to ride those days. अभी तो खैर मैं खुद का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखती हूँ. But yes, I'm just happy to be a part of this amazing celebration. आप बाइक करते हैं? एक ज़माने में हुआ, कॉलेज के दिनों में हुआ था. अच्छा कुछ मैं टोटल रफ एंड टफ लाइक अ टॉम बॉय. हाँ, वो मैं थी. तभी मेरे बाल छोटे से थे. अब खैर my school friends they met me after some time and they were like, तू पूना पार्टनर से लंबे बाल. जैसे जैसे आप कट मारते हैं, आप भी कट मारते दिखाएंगे। मतलब बड़ी हरकतें की. आई डोंट थिंक मुझे बोलनी चाहिए कैमरे पे. हमारे माय कॉप्स आर आल्सो वाचिंग दिस. सो नहीं, मैं बड़ी सीधी सादी बड़ी शरीफ लड़की हूँ, तो आई डोंट डू एनी So सच ma'am, DSBK थिंग. bike has given us very much safety measures. So what are your views on that? Like in India we don't have that education for the bikers. So what are your views? See, that is something I don't like, honestly. With respect to those Indians जो हेलमेट पहनकर चलाते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को हेलमेट, मतलब उनके लिए हेलमेट ना पहनो, इट्स वेरी कूल थिंग. दे नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट कूल. कॉलेज के दिनों में मैंने तो खैर मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों को देखा, विद बाइक एक्सीडेंट्स एंड स्टफ, एंड आई एम ग्लैड दैट दे आर कमिंग विद सेफ्टी मेजर्स, एंड आई थिंक everyone should take care of their safety, because जान है तो जहान है. अच्छा मैं तो आप कितना सेफ्टी यूज करते थे जब आप बाइक चलाते थे? मैं सीट बेल्ट लगा के बाइक चलाती हूँ. नया है। हम जैसे लोग को जरूरत पड़ती है. Okay ma'am, so when you have said कि आप बाइक चलाते थे, so what were your favorite models? ये हम बाद में मतलब मैं नहीं चाहती मुझ में भी कुछ भी. मैं I'm finding I've done all my मस्तीज in my life. I don't think किसी भी लड़की ने उतनी ज्यादा हरकतें की. जो भी मैंने करके सब छोड़ दिया है. मतलब मैं खुश हूँ मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा. Last question. मैं कोई फनी इंसिडेंट जो हमसे आप शेयर कर सकते हैं बाइक राइडिंग की कॉलेज डेज में, क्योंकि आपने काफी कुछ कहा है. Last question ma'am, like I'm just thinking nothing was funny there. It was quite lastly ma'am, what safety measures would you like to tell to the audience? I think every guy and every girl, whoever is doing all the wheelies and stoppies and all that, just a request, my beautiful people. कॉलेज के दिन ना वो थोड़े होते भी है ना. वी आर लाइक विद दिस गरम खून, ऐसा कि हाँ हमारे हमको सब कुछ करना होता है उस वक्त लाइफ में. हम सबको अमिताभ बच्चन बनना होता है लाइफ में उस वक्त. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपके माँ बाप हैं पीछे जो आपका वेट करते हैं. आप घर पे वापस जाओ तो बस वो उतना आप सेफ्टी मेजर पकड़ के भी चलोगे ना, आप फिर भी चलोगे. So that's it, yes. Thank you. लास्ट क्वेश्चन प्लीज. हाँ? आप जाके रेसिंग देखने यूएई में? Yeah, now, what would you like to say? And as a sport in totality, what's your opinion? I think it's amazing. I think it's so great that so much of this is now coming to India. I think the world is looking to India now in terms of fashion, in terms of sport. I think it's so exciting. This is one of the most exciting times to be in India. I remember many years back, when I started doing advertising, I used to be one of the few girls in India who used to ride a bike. I've done a lot of ads where I used to ride a bike, and over the years I've seen so many young women have taken to biking. So many young women are getting onto their bikes and being avid bikers. It's really cool. I think it's a really cool sport, and I'm very excited. आप अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं टीना to participate in something like this? Your passion maybe for biking and racing and learning it. Yeah, so my only worry until now used to be that biking is not, if you're doing it on the roads, it's not very safe.
But I think with something like this, with something like a DSBK, because it's going to be done, you know, with all the safety protocols in mind, I think I would love to give it a shot. For women out there, Tina, what message would you like to give out? We've seen a lot of aspirant women also who would want to try the sport, get into it, Yeah, but they yeah. do have not a nod from family, because Yeah. I think in India we still consider this as a taboo. Women will not ride bikes, and Yeah. it's too heavy for them. What would you like to say? I think, you know, this is what I've told women all my life. My first rule in life is to not listen to what people say. Don't listen to what your family say. Don't listen to what your neighbors say, what your chachi, mami, whatever says. Do what your heart feels like. Go after your heart, because it's one life. You only live once. Do everything you want to in this one life. Very well said, Tina. Thank you so much. Thank you. Any question, anyone? Thank you. Thank you. आई थिंक इट वॉज वंडरफुल. आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू नासिर भाई, और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जेन्युइनली इंडिया में अगर हम देखते हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ हमारे वर्ली सी फेस में यहाँ पर, बिकॉज इट इज़ मतलब लोगों में इंटरेस्ट बहुत है, बट आई थिंक उसको सपोर्ट करने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है. सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इज ऑसम, एंड अगर ये आता है यहाँ पर तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा. Answer. What would you like to add? Well, I like one point which he said that Nadir ji कि बाइक सब चलाते हैं और हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमें बाइक पे से डर लग जाता है, अरे यार कौन निकला यहाँ से, जस्ट बिकॉज उनको शो ऑफ करना होता है कि मैं बाइक है और मैं चला रहा हूँ. तो वो सेफ्टी का जो गेयर है वो जो ध्यान में नहीं रखते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबॉडी शुड टेक केयर ऑफ इट. एवरी टू व्हीलर पर्सन शुड डू दैट. तो आपको अगर रेसर बनना है, देयर आर ट्रैक्स, आप उसको प्रोफेशनली करिए, सीखिए और जाइए. व्हाई डोंट यू ब्रिंग लॉरेंस टू इंडिया? That's what I would say. Rather than doing racing on the road and making other people's life hazardous, वो नहीं होना चाहिए उसके. एंड इस इंडिया का नाम भी रेसिंग में आया, व्हाई नॉट? Of course, like I'm happy अभी जैसे एशियाड के अंदर इतने सारे मेडल्स आ रहे हैं जिनको हमने कभी हराया नहीं, उनको हम हरा रहे हैं. We should make name in GPs also. Why not? As women, biking को लेके आप लोगों को क्या पर्सपेक्टिव? ऑनेस्टली आई थिंक एज अ वुमेन पर्सनली स्पीकिंग मुझे कभी बाइक में एक डर रहा है, जैसे हाउ शी सेड कि कि बाइक का सोचकर ही एक लगता है डर. तो कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं कि ये अवेलेबल है मेरे लिए, ये मुमकिन है, मैं कर सकती हूँ. एटलीस्ट पर्सनली मेरा कभी ध्यान नहीं गया, बट मे बी अगर ऐसी फैसिलिटीज़ है, ऐसी अकेडमी होगी, ऐसी ट्रेनिंग होगी तो मे बी मैं भी सोच सकती हूँ इस बारे में. So yes, it is a very good initiative coming down here, and I think it's high time we India also have ours. Yes. Yeah, so I just feel कि बचपन से मेरे घर में जैसे फ्रेंड्स वगैरह आते थे, देवर सबके पास बाइक हुआ करती थी, क्योंकि तब एक होता था कि बाइक है हमारे पास में. तो ऐसे मुझे भी बाइक सीखनी है. तो आई यूज्ड टू राइड बाइक, मतलब बुलेट तक किया है, पर इतने सालों से छूटने के बाद में अभी ज़्यादा फैया हो गया मेरा बाइक का. बट येस, आई वुड लव टू. और जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज एजुकेशन हाउ टू राइड अ बाइक इज वेरी इम्पॉर्टेंट. न खरीदने से आपको सहूलियत नहीं मिलती है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो भी बहुत जरूरी. बहुत बहुत